Wagle Limited took over a business of Messrs Pravin Brothers with respect to 1st April 2014. So this is a purchase date of the business. कब लिया था? 1st April को. So this is a starting date, that is commencing वाला date है हमारा, जब business हमने start किया था वो date. वागले लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी को कब इनकॉर्पोरेशन मिला? इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of September 2014. फाइन. सो वी नीड टू कंसिडर अप टिल 31st of August, क्योंकि 1st September को तो मिल गया था, तो हमारा अगर प्री इनकॉर्पोरेशन जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी अप टिल 31st of August. It summarizes the profit and loss account for the year ended 31st March 2015. So this is a profit and loss account given for the year end 31st March 2015. So it means that from the start date of the business to the incorporation, it will be pre. From the incorporation till the year end, it will be the post duration. Correct? So we can easily find out the time ratio by just these 3 sentences. ठीक है, चलो लेट्स फाइंड द टाइम रेशियो. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना मंथ्स हुआ? 5 months. सो 5 months वी आर हैविंग अ प्री इनकॉर्पोरेशन. सो रिमेनिंग कितना बच गया? 7 months. सो 7 months के लिए होगा पोस्ट. So what will be the time ratio over here? 5:7 will be your time ratio. So let's do the working part. देखो 1st April से लेके 30, क्योंकि 1st September को ही वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को ही इनकॉर्पोरेशन मिल गया था, तो वी हैव टू टेक अप टिल 31st of August. तो प्री में 5 months एंड पोस्ट में 7 months. So the time ratio comes to 5:7. चलो, any doubt till here? Fine. Then in the previous class also I told you okay, that before going to your profit and loss account class, always first see what is the additional information which has been given. Okay, पहले additional information देख लो क्या दिया है, उसको समझो, working note करना है तो कर लो, then you move to the profit and loss account. ठीक है, so here we have additional information. The first one is ट्रेंड ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू मार्च वॉज अंडर. देखो अब जो सेल अप्रैल से मार्च का, देर वॉज अ डिफरेंट ट्रेंड विच वॉज बिन फॉलोड. सो दे हैव गिवन अस द ट्रेंड एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू कैलकुलेट द सेल्स रेशियो. अब देखो जैसे ही तुम लोगों को ऐसे मंथ्स दिखे ना, द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज ना, राइट डाउन द सेल्स रेशियो और सारे मंथ्स को लिख लो. ठीक है, राइट डाउन द मंथ्स इन द लाइन. से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. देन चाहिए ना तो यू कैन पुट इट लाइक दिस. अगर आपको चाहिए कि मुझे ये इनकॉर्पोरेशन डेट मुझे याद रखनी पड़ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इन द एग्जामिनेशन व्हाइल ड्राइंग इन योर बुक एज वेल, यू जस्ट मेक अ लाइन लाइक दिस. तो तुम लोगों को भी समझेगा कि ये प्री है इतना पार्ट एंड देन लेटर ऑन दिस इज अ पोस्ट पार्ट. ठीक है, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. So what you have done, you just write down the name of the months. सारे months के नाम लिख लो. So it would be easier for you to calculate it up. अब हम पढ़ते हैं कि क्या कितना अमाउंट दिया है. For the month of April and May, the sales was 8,500 per month. So what you are going to write? You are going to write 8,500 for the April and 8,500 for the May. अब फिर जून एंड जुलाई का सेल कितना था? 10,500. So you will be writing down 10,500 for June as well as for the July. Then they are telling that for September and for the August and September it was 12,000 per month. तो फाइन, अगस्त और सितंबर हम 12,000 लिखेंगे. For October, November it was 14,000 per month. Fine. So October and November को 14,000 we will be writing down. December onwards means from December till the year end कितना होगा? 15,000 per month will be the sales. So fine, December, Jan, Feb and March it will be 15,000. Now we know that the date of incorporation is 31st of August, that is 1st September. We are going to take up till 31st of August. So just take the total. अप्रैल से लेके अगस्त तक का सिर्फ टोटल ले लो. सी डाउन ओवर हियर हाउ मच यू आर गेटिंग? 50,000. सो राइट डाउन 50,000 ओवर हियर फॉर द प्री. सेम वे टेक अ टोटल फॉर द पोस्ट.
So from September month to March, see down the total how much you are getting, 1 lakh for the post. तो पोस्ट सेल्स 1 लाख हुआ, प्री सेल्स 50,000. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेशियो 50,000 is to 1 lakh. So your sales ratio will be 1:2. So you will be getting your sales ratio 1:2. ठीक है. So देखो जब हमने ऐसे months लिख दिया, so it became very much easier for us also to calculate. Now next part, the second information. आउट ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो भी टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया होगा, 3,600 वर इनकर्ड बाय द सेल्समैन. मतलब सेल्समैन ने किया, मतलब ये सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा. सो फर्स्ट बिफोर गोइंग टू दिस वी फर्स्ट नीड टू सी हाउ मच ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज गिवन. वी हैव 6,600 का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विच इज बिन गिवन इन द सम. सो फर्स्ट वी विल बी राइटिंग डाउन ओवर योर 6,600 ट्रैवलिंग एक्सपेंस. उसमें से जो भी सेल्समैन का है दैट विल बी डिवाइडेड इन द सेल्स रेशियो. तो जो बचा दैट इज अ रिमेनिंग पार्ट, द रिमेनिंग विल बी डिवाइडेड फॉर द होल ईयर, एंड फॉर द होल ईयर मीन्स इट विल बी डिवाइडेड इन द टाइम रेशियो. सो यू नीड टू डिवाइड दिस इन द टाइम रेशियो. क्लियर. टोटल जो था उसमें से कुछ पार्ट सेल्समैन का था, it means it will be divided in the sales ratio. कुछ part was for the whole year, that is for the office purpose, so it will be for a time, it will be divided in the time ratio. Now the third information, Wagle Limited took over the furniture worth ₹72,000 from Messrs Pravin Brothers. मतलब जो पहले Pravin brother was the owner of the business, then later on जब से इसने जब टेक ओवर कर लिया तो वागले लिमिटेड ने 72,000 का जो असेट था प्रवीण के पास वो भी उन्होंने ले लिया. While it purchased a new furniture, और बाकी जो दूसरा फर्नीचर था वो भी उन्होंने परचेज किया on 1st February 2015 for ₹48,000. It provided the depreciation at the rate 10% per annum. मतलब देखो ये जो 48,000 है असेट, ये हमने पोस्ट ड्यूरेशन में खरीदा है. फर्स्ट फेब्रुवरी मीन्स आफ्टर योर इनकॉर्पोरेशन डेट. सो इसका जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा विल बी चार्ज ओनली फॉर द पोस्ट पीरियड. वेर एज ये जो 72,000 का जो असेट था इट वॉज बीन यूटिलाइज फॉर होल ऑफ द ईयर. तो इसका जो भी डेप्रीसिएशन होगा दैट यू विल बी this calculating first and then you will be dividing in the time ratio. Clear? So let's do the calculation first for the depreciation. अब देखो हमारे पास जो हमने टेक ओवर किया था डेप्रीसिएशन तो 72,000 का था. So we will be writing down depreciation for old furniture was 72,000 and उसके ऊपर 10% of depreciation has been charged. So 72,000 का 10% comes to how much? It comes to 7,200 and this furniture has been utilized for the whole year. So you need to divide this 7,200 in the time ratio. Fine. And as I told you, new furniture has been purchased in the month of February. तो पहले depreciation ये देखो कि कितना charge करना है. Whole Feb you have utilized and whole March you have utilized. It means it has been utilized only for a 2 months. So we will be charging the depreciation only for a 2 months. So 48,000 into 10%, but only for a 2 months. So this comes to 800 and this 800 wholly belongs to my post period. क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट फैब को परचेज किया था तो ये 800 का होल ऑफ द डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज इन द पोस्ट ड्यूरेशन. नाउ फोर्थ इंफॉर्मेशन इज दैट ऑडिट फीस आर पेड फॉर द होल ऑफ द ईयर. हमने पूरे साल के लिए ऑडिट फीस पे की तो ठीक है. ऑडिट फीस इफ इट इज पेड फॉर द होल ईयर वी विल हैव टू डिवाइड दिस ऑडिट फीस इन द टाइम रेशियो. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015. Now read this carefully. They are asking us to prepare a statement, not an account. तो statement का मतलब क्या हो जाएगा? Profit, that is income, minus your expenses will give you the net profit or net loss, whatever it will be coming. So they are asking us to prepare a statement, class. So अगर ऐसे बोला है question में कि you have to prepare a statement, then give a statement का form. If they are asking you to prepare a profit and loss account, then prepare a profit and loss account. For the year ended 31st March 2015,
showing profit for the pre and the post incorporation period separately. Fine, तो वैसे भी हम तो divide करके separately ही बताने वाले हैं. So fine. So now we can go to now we will be seeing the profit and loss account. We will be reading one of the expense and we will be looking at it in which ratio it will be divided off. The first one is salaries class. Salary, तुम लोग मुझे बताओ कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे सैलरी को? Obviously time ratio, because we are paying the salary for whole of the year and they have not given us any specification that the salary is for the office staff or the salary is given for to a salesperson. So this salary will be divided in the time ratio. So ठीक है, तो हम क्या करते जाएंगे, साथ साथ में हम पोस्टिंग भी स्टार्ट कर देते हैं. So first you give the heading Wagle Limited. This is a statement of profit and loss. So write down statement of profit and loss for the year ended 31st March 2015. Prepare a statement. First column will be your particulars column. Second column will be your total column. Where you will ये total लिखोगे, ये वाले जो भी total होंगे that you will be writing down over here. Then the third will be basis column where you need to आप कौन से ratio में bifurcate कर रहे हो that you need to write down over here. And then later on it will be pre-incorporation and the post-incorporation. ठीक है, since they are asking us to prepare a statement, the format will be income minus expenses. So first line में we will be writing down income. Leave one line. We have only gross profit as an income. And in the next line, you just write down the expenses. तो हमने expenses में सबसे पहले देखा salaries which we need to divide in the time ratio. So you will be writing down 2 salaries. 12,000 is the amount, so write down 12,000 in the total. In which ratio you are dividing? You are dividing in the time ratio. What is the time ratio for this sum? 5:7. So divide this 12,000 in the ratio of 5:7 and tell me the answer. Yes, 5,000 and 7,000. Now next one is rent and taxes. Now again this rent and taxes will be divided in which ratio? Time ratio. So first see what is the total. Total is 9,600. So write down 2 rent and taxes. In the total you will be writing down 9,600. Basis will be a time ratio. So we need to calculate this. 9,600 divided by 12 into 5 into 7. So this will be 4,000 and 5,600. Next one is carriage outward. Now we all know that carriage inward हुआ तो it is on the purchase, whereas carriage outward मतलब हम sales पर कर रहे हैं. So this carriage outward will be divided in which ratio? Sales ratio. So total is 7,500 which need to be divided in the sales ratio. Sales ratio is 1:2. So divide the 7,500 in the ratio of 1:2. You will be getting 2,500 and 5,000. Next one is audit fees. And we have a information which has been given for the audit fees that it is for the whole year. It means it will be divided in the time ratio. So this 1,200 we need to divide in the ratio of 5:7. So divide in the ratio of 5:7. Yes, 500 and 700. Next one is traveling expenses. Now for the traveling expenses, इन्होंने हमें ये दिया था कि certain part is for the salesperson and rest we need to divide in the office ratio. So we have done this over here. कितना part था sales में? 3,600. So 3,600 will be divided in the sales ratio. ठीक है, sales ratio is 1:2. So that it comes to 1,200 and 2,400. And बाकी का जो बच जाएगा, this remaining part, that will be divided in the time ratio. ठीक है, that will be divided in the time ratio. This 3,000 needs to be divided in the time ratio. If you want, we can write it down over here. Sales
and time ratio. So time ratio means 5:7. Next is printing and stationery 2400. Used for the office purpose for the whole of the year. So needs to be divided in the time ratio. So to printing and stationery 2400 needs to be divided in the time ratio, that is 5:7. So do 24,000 divided by 12 into 5 will give you 1,000. 24,000, sorry, 2,400 divided by 12 into 7 will give you 1,400. Next is electricity charges. Now whole, again electricity will be used for the whole year. So the charges you need to divide in the time ratio. So this 3,000 will be divided in which ratio? It will be divided in the time ratio. 5:7. So you will be getting 1,250 and 1,750. Next one, commission on sales. Now sales per commission दिया है. It means that here we need to divide this amount on the sales ratio, क्योंकि आप sales पर दे रहे हो ना, तो यहाँ पर bifurcation भी amount किस पे करोगे? sales ratio में से 4,500 will be divided in which ratio? sales ratio. That is 1:2. तो 1,600 and 3,200 is your answer. Next is depreciation. They have given us the information for the depreciation. हमने working notes भी देखे. तो देखो वर्किंग नोट्स में दिस 7,200 वी नीड टू डिवाइड इन द टाइम रेशियो. तो कितना आएगा? 7,200 को डिवाइड करो इन द टाइम रेशियो. हाउ मच यू विल बी गेटिंग? Yes, 3,000 for the pre and 4,200 for the post. Correct, correct. अब देखो और क्या बोला है? सेकेंड, when new furniture was being purchased, this we have to give 800 in the post ratio as well. तो हम क्या करेंगे? 4,200 plus 800 कर देंगे. See here in the formula bar. So we will total it up and we will be writing down 5,000 directly in the post. ठीक है. 7,200 को पहले डिवाइड किया तो we got 3,000 and 4,200. ठीक है. Then later on what we did, हमने जो भी पोस्ट का था वो पोस्ट का 800 also we have added in this. So total comes to 5,000. चलो next now. Next is advertising expenses. Now advertising has been done for the sales purpose. So this advertising expenses will be divided in which ratio class? It will be divided in the sales ratio. So to advertising expenses, 2,400 needs to be divided in the sales ratio, that is 1:2, 800 and 1,600. Next is preliminary expenses written off. So this all your preliminary expenses जो भी write off होगा that will be in the when we join the company. तो company में preliminary expenses return off करेंगे तो ये जाएगा post duration में. This 900 needs to be divided in the post incorporation. So directly we will be writing down the post and 900. We forgot it, the debenture interest as well. Now debentures are in the company. So debenture interest be directly it will go in the post. So this 800 you need to directly write down in the post column. Now तो expenses सारे हमने देख लिए.
Now we need to see the income side. Income में हमारे पास सिर्फ gross profit है, and we know that profit depends upon the sale, and this profit will be divided in which ratio? Sales ratio. So this 7,000 write down in the under the income, gross profit, and you need to divide this in which ratio? Sales ratio. 7,500 will be divided in the sales ratio. That is 25,000 and 50,000. 25,000 and 50,000. Then now we can start with the calculation part. ठीक है, सारा पोस्टिंग हो गया, हमने सारे एडजस्टमेंट्स को भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया. नाउ वी नीड टू जस्ट डू द टोटल. लेट्स टेक अ टोटल फर्स्ट. यहाँ तो 75,000 ही है बिकॉज वी हैव ओनली वन आइटम इन द इनकम साइड. व्हाट अबाउट द एक्सपेंस साइड? तो एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे. हाउ मच वी आर गेटिंग? 59,200. 59,200. So you need to write down over here 59,200. How you will cross verify whether this सारे expenses आपने लिखे हैं या नहीं? देखो 75,000 is the total, उसमें से 15,800 is your net profit. So subtract it up, you will be getting your expenses. 75,000 minus 15,800 will give you 59,200. So like this you can verify it up. अब देखते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन में हमें क्या हो रहा है, मतलब से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. सो सी द व्हाट इज द इनकम ओवर हियर. 25,000 की इनकम है. अब एक्सपेंसेस का टोटल लेते हैं. एक्सपेंसेस का टोटल इज कमिंग टू 22,100. इट मीन्स योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर. करेक्ट, योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर. सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट. तो हम जब प्री इनकॉर्पोरेशन में वी नेवर टर्म इट एज अ प्रॉफिट, वी टर्म इट एज अ कैपिटल रिजर्व. So here you will be giving the heading capital reserve and you will be writing down the difference. That is 25,000 minus 22,100, which comes to 2,900. Same way, we need to do it for the post incorporation as well. So देखो post incorporation में profit is how much? That is income. Sorry, income is how much? 50,000. Take a total of the expenses. It is coming to 37,100. So again your income is higher than the expenses. So आपको क्या मिला? Profit मिला, and this is a net profit of yours. So let's subtract and write down 50,000 minus 37,100. So you will be getting 12,900 as an answer, and that will be termed as a net profit. Correct. I'm showing you the sum, whole of the sum ones.